Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the bell icon and don't forget to like. Thanks once again. आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओरिएंटल स्पेशल डिश मशरूम फ्राइड राइस। मशरूम तो बड़े छोटे बच्चे सबको पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट विद मशरूम फ्राइड राइस। तो इसके लिए चाहिए हमें प्री कुक बासमती चावल और ब्लांच किए हुए मशरूम्स। और हमें चाहिए ब्लांच ब्रोकली, चॉप कैरेट्स, रेड एंड येलो जुकीनी के हार्ट्स, ग्रीन चिली चॉप एंड ग्रीन कैप्सिकम। और हमें चाहिए जिंजर चॉप, गार्लिक चॉप, ऑनियन चॉप, डार्क सोया, चिली सॉस, रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। Optional, we can use chopped celery. और हमें चाहिए स्प्रिंग ऑनियन, बीटन एग्स एंड ऑयल। एक पैन में तेल ले लीजिए। अब उसमें चॉप ऑनियंस डाल दीजिए और जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो सब डाल देना, जैसे हार्ट ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन जुकीनी, ब्लांच ब्रोकली एंड चॉप कैरेट एंड चॉप कैप्सिकम। सौते इट नाइसली, अच्छे से सौते कर लेना। नाउ ऐड द ब्लांच मशरूम्स। जो हमने ब्लांच मशरूम्स ऑलरेडी करके रखा था, अब उसमें डाल दीजिए। Now add the rock salt, add crushed pepper, add the beaten egg, फेटा हुआ अंडा डाल दीजिए। जब अंडा अच्छे से पक जाए तब हम उसमें कुक्ड राइस डाल देंगे। उससे पहले हम उसमें डार्क सोया, चिली सॉस और विनेगर अच्छे से, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना।
अब हम इसमें कुक्ड बासमती राइस हम डाल देंगे। खाली हमें हल्के हाथ से खाली बासमती राइस को खाली कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से प्यार से घुमाना है। ऐड द स्प्रिंग ऑनियंस टू इट। नाउ योर mushroom fried rice is ready. Add spring onions. Now let's do the magnificent plating with Try this recipe and enjoy with your family. Please do subscribe and give me wonderful comments on this recipe. Once again, thank you to all my viewers. Thanks for watching.